Welcome to Brainy Elements. So guys, let's install the components inside the Intel NUC 12 generation i5. So मैंने ये सब निकाल लिया है बाहर. इतना सारा सामान लगाएंगे. 2 क्रूशियल की 16 GB की रैम है, 1 TB ये है हमारी SSD SATA वाली, और 500 GB हमारी NVMe SSD है. तो ये सब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे. सो इट्स वेरी, सो इसको उल्टा कर लेता हूँ मैं. सो ये रहा मेरा टूल. तो पहले एक बार इसके अंदर देख लेते हैं. सो मदरबोर्ड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है यार, मतलब यू कैन सी. सो इसके अंदर ये वाईफाई वाला इसमें पहले से लग के आता है ये, और ये भी AX211 है इंटेल का, तो ये अच्छा ही होता है, वन ऑफ द बेस्ट. और आप देखेंगे इसमें एंटीना वेंटीना सब कुछ फैक्ट्री से इंस्टॉल हो गया है. सो लेट्स इंस्टॉल दी NVMe. सो NVMe हमारा यहाँ पे इंस्टॉल होगा, NVMe ओनली. तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ. थोड़ा ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा टाइट करेंगे. तो ये लग गया है. अब चलते हैं फर्स्ट 16 GB. नाउ इट्स द टर्न ऑफ दिस सेकेंड वन, प्रोडक्ट ऑफ मलेशिया करके. कुछ भी हो, CEO इसका इंडियन ही है. Oh shit. ये भी लग गया. नाउ द थर्ड थिंग, हमारी 1 TB की SATA SSD, ये भी लगा देता हूँ. तो SATA के लिए बहुत ही स्मार्टली इन्होंने डिज़ाइन किया है. यहाँ पे फिट करना है SATA को, तो यहाँ पे फिट हो जाएगी वो. तो बेसिकली है तो ओपन ही, बट स्टैकिंग यूज़ किए इसलिए साइज़ छोटा हो गया. बड़े जो डेस्कटॉप होते हैं उसके अंदर ऐसे स्टैकिंग अब नहीं कर सकते हो. वाइज थोड़ा फिट होने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो आई थिंक आई फाउंड द रूट कॉज. तो ये देखिए आप, इधर ये बीड्स लगाए हैं. तो इफ यू सी, तो जो इनकी जो प्लेसमेंट है लेकिन बिल्कुल SATA के हिसाब से है. देख रहे हैं आप. सो आप इंदर से देखेंगे. सो लेट मी रिमूव देम एंड आई विल इंसर्ट अगेन दीज रबड़ के जो पैड्स हैं इनको. So guys, I was quite lucky that so it's some screws are there inside the box only. So I think yes, I think these are screws for SSD. So let me try. अगर ये नहीं होगा then I have to go for the new screws. So guys, I have found these screws in the box itself. So I just missed that inside the box. So what I'll do is I'll just let me fix all these screws on the hard drive SSD. All done. So marking is also there, front, and this is front.
So guys, everything is fixed. So here is the hard disk, SSD, okay, SSD of 1 TB, 216 gigs of DDR4 RAM, 1500 GB NVMe SSD, okay, everything is intact. इसके डाउन दिस SSD, इसके नीचे इसका वाईफाई का राउटर है. एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे इसका हीट सिंक है, जो ऐसे करूँगा तो इस पर चिपक जाएगा. सो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर इज़ दिस वायर. ये हीट सिंक के बीच में नहीं आना चाहिए, बिटवीन हीट सिंक एंड दिस. दैट आई कैन सी वन पोटेंशियल गैप. ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है फ्रॉम इंटेल, दैट दे कैन गिव दिस कनेक्टर समवेयर दिस साइड और दैट साइड, so that it won't come in between that. So but that is very minor thing. As also you can see, there is enough air vent for this NVMe SSD. So let me close this and then we'll show you how it looks. So ये पूरा रबर है, तो you can place it on this also. ये पूरा grip में रहेगा. सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं इसको भी ऊपर वाला कवर भी आई ओपन, बिकॉज आई हैव जस्ट सीन कि यहाँ पे ओपनिंग के लिए दिया हुआ है. सो एज यू कैन सी कुछ नहीं है. आई थिंक इट्स अ कंप्लीट हीट सिंक डिवाइस. बहुत ही बड़ा हीट सिंक लगा दिया इन्होंने, पूरा मेटल है. ये एंटीनास भी लगा दिए यहाँ पे, तो वेरी गुड जॉब. मतलब इतना सही डिज़ाइन है, दिख रहा है मेरे को एंटीना. यू कैन सी हेयर सोल्डर्ड है, यहाँ पे भी यू कैन सी राइट. इट्स द फैन. अच्छा है यार, मतलब नाउ यू कैन सी एयर इधर से भी जाएगा, लेफ्ट एंड यू कैन सी राइट. बोथ साइड से एयर इनटेक होगा एंड डायरेक्टली इधर से पास हो जाएगा. ओके, it's good here. Let me install this back. Very good quality yaar, very decent quality. दिल खुश हो गया. So guys, this is ready. So NUC is ready, loaded with so much of love, so much of RAM or so much of memory. So कुछ नहीं करना है अभी, जस्ट ये लगाने का है. एकदम स्लिम ब्रिक है, आइसक्रीम जैसा. अभी मैं इसको पावर ऑन करता हूँ एंड आई विल ओपन द बायोस एंड शो यू गाइज व्हाट ऑल इट इज़. Hi, hello, namaste. Please like and subscribe to support this channel.